संकीर्तन की जय, प्रभात की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभु संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीमदानन्दं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरुं साग्रजातं सगणरत्नम् सागरितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधे विष्णुभानुसुते नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Hare Krishna. So I welcome all the devotees for our regular Saturday Bhagavatam class. So which chapter we are on? Okay, but what is the name of the chapter? Pandavas retire timely. So time पे retire हो गए. But in our material world, I meet many of our well-wishers. They are 68, 67. Retirement का no नामो निशान. And when we ask, what is your plan? They say, कुछ नभी नया शुरू करना. ये तो कर दिया अभी जो भी अभी कुछ नया शुरू कर. So no, not knowing, that is out of ignorance they are saying. Lekin at the age of 50 only one should become serious to go in the one, ekavan. Know the meaning of ekavan? One की तरह आप प्रस्थान कीजिए. So Prabhupada बताते हैं one means not jungle. You don't have to go to jungle. You have to go to which one? You have to go to Vrindavan. तो वहाँ पे ज़्यादा जाना चाहिए और ज़्यादा तपस्या करना चाहिए, ज़्यादा चैंटिंग करना चाहिए, धीरे धीरे रिटायर होना चाहिए. Responsibilities you should give to your sons. उनको सब सिखाना चाहिए. And then you should try to get out of this cycle. Cycle in the sense you should get out of this entanglement. लेकिन वो पहले आता था, सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं. आज के लोग वैसी
घर पर ही रहूंगा मैं, कहीं और नहीं जाऊंगा मैं. So not knowing the importance. So Pandavas, they were very, very young. They were not like 70, 80. They were very young. You can see the face. They were very young and then they retired. तो भगवान चले गए तो अभी रह के भी क्या फायदा. So immediately all the 5 Pandavas with Draupadi, they went to the north. तो वो chapter का नाम है Pandavas retire timely. So I was seeing this whole chapter was about Arjuna, is about Arjuna. Whole chapter, you see, Arjuna is asking question. Sorry, Yudhishthira is asking question. Then Arjuna is going to reply. Then Arjuna is going to lament. So whole chapter is about Arjuna only. So one day, Parvati, she asked Shivji, among all the demigods, which worship is you considered as the best? So Shivji बताते हैं कि सबसे best worship कौन सा है, right? So this is shloka from Ramayana and some other Puranas. This shloka is quoted. So Shivji, this Parvati, she asked question to Shivji कि कौन सा worship सबसे best according to you? Then Shivji, he replies, Aradhanam sarvesham Vishnuradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. कहते हैं कि among all the demigods, he is not taking his own name also. कि मेरा भक्ति करना चाहिए, मेरा भक्ति श्रेष्ठ है. Shivji is not taking his own name. He is teaching that among all the demigods, Vishnu Aradhanam param, that one must worship Lord Vishnu, Lord Krishna. That is considered as the highest worship. But more than that, Parvati asked, is there anything more also? इसके भी अलावा कुछ है क्या, ताकि मैं वो करूं? Then Shivji said, very good question. Actually, तस्मात् परतरम देवी, हे देवी, उनसे भी बड़ा वर्शिप अगर आपको करना है, that is तदीयानाम समर्चन. You have to worship the devotees of Lord Krishna. So that is the best and the highest worship. Devotees को. Many people, they don't take interest in serving devotees, developing relation with devotees. उनको कोई पड़ी नहीं है. उनको सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान और मैं बस, भाई बाकी की दुनिया गई उधर. Why? I don't want any, material relationship. सब धोखे देते हैं ये वो, So they don't want to develop any kind of relation, and they just cut off from devotees and they just want to worship Lord Krishna directly. Lekin Shivji, who is Acharya, who is Vaishnavanam Yatha Shambho, he says that, it's not like that. Vishnu Aradhanam Param, but Tasmat Parataram Devi, Tadiyanam Samarchati. If you want to highest worship than Lord Vishnu, Lord Krishna is worshipping his devotees. That is the highest. तो हम लोग devotees की भक्ति कैसे कर सकते हैं? हाँ, भक्ति इन द सेंस सेवा कैसे कर सकते हैं? One is वपु सेवा and other is वाणी सेवा. So devotees को हम वपु सेवा कर सकते हैं या तो वाणी सेवा. So वपु सेवा is you serve directly. You feed prasad. You wash his or her clothes. You bring vegetables for them from the market for the devotee, for the Vaishnava. So like that, you are doing some physical work for the Vaishnava. That is also considered as worshipping Vaishnavas. So you have to serve the devotees. So if this is not possible, then what is it? Then Vani Seva. So you have to hear about the devotees, hear from the devotees. That is also one kind of seva. So the whole chapter is about Arjuna. तो हम लोग अर्जुन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं. अर्जुन क्या करने वाले हैं, कैसे लैमेंट करेंगे. So we are going to see that only. So that is also is one kind of bhakti, because we are discussing about the pure devotee of Lord Krishna. That is also hearing about the pure devotee is also considered as bhakti, worshipping that devotee. So
So we are going to hear about Arjuna. Last time we saw many things that many examples were there. You can see over here that Arjuna was able to pierce the fish, and that fish, and then Khanda forest, which was what was the pastime? Khanda forest. Who wants to eat the Khanda forest? Who wants to eat fire? Agnidev. Because somebody did tapasya, yajna, और इतना घी डाला कि अग्निदेव का पेट खराब हो गया, अपचन, indigestion हो गया. And now indigestion is then you have to eat the herbs and roots, वो सब खाना पड़ता है. तो वो खांडव फॉरेस्ट वो जब खाएंगे तब ठीक होगा. Then he came to Arjuna and Krishna, and he told that Krishna ने देखा अग्निदेव कैसे आए. उन्होंने बोला कि ऐसे से है, मुझे खाना, तो जाके खाओ, क्या प्रॉब्लम है तुमको. बोला कैसे खाओ, अर्जुन वो जो इंद्र है मुझे खाने नहीं देता. No, Indra is not allowing me to eat because there is one snake serpent lives over there, that his name is Takshak, and he has good relationship with Indra, and Indra has promised Takshak that I will give you all protection, you don't worry, nobody can touch your forest. So like that, whenever I go to eat means वो fire होगा वहां पे, वैसे ही he can eat, but जैसे मैं खाने जाता हूँ ऊपर से इंद्र पानी बरसाते हैं. That's why I'm not able to eat and I'm suffering from indigestion. You please help. So Indra, Krishna bolte, okay, ठीक है, no problem. We have Arjuna. Arjuna can protect you. He has all celestial weapons. He can help you. तो इंद्र अर्जुन जो है वो बाण चलाते हैं और एक कवच बनाते हैं जिससे वो पानी ही नहीं गिरेगा. The water cannot fall down, and Agnidev, he ate the whole forest. तो फिर फाइट हुआ, फिर फाइट अर्जुन ने फाइट किया, कृष्ण ने भी फाइट किया, and these demigods were defeated and they were very happy. They came down, they gave blessing to Arjuna, and they also gave some celestial weapons to Arjuna. So Arjuna is saying, why this happened? Because I don't have any power. This is because the empowerment, by Lord Krishna. He has empowered me to do these wonderful things. नहीं तो मेरे अंदर क्या शक्ति है. So like that, he gave many examples. We were saved from Durvasa Muni, that pastime also. Then Arjuna was able to amaze Shivji. So मल युद्ध हुआ शिव जी के बीच में और अर्जुन के बीच में. तो अर्जुन वो फाइट किसके ऊपर हो रहा था कि वो एक सुअर था, उसको मार दिया था. So they both were fighting. मैंने मारा है, it is mine, like that. So तो मल युद्ध हुआ. And then Shivji was so, happy and satisfied with his power and his greatness. Immediately he took the form of the Shiva, and immediately Arjuna saw, oh, this is Lord Shiva. Immediately bowed down. He offered obeisances, and then Shivji gave Pashu Pashat Astra. Pashu Pashat उसको बोलते. So वो अस्त्र दिया, which was very important in the battlefield. So he's saying, why this happened? I was able to fight with Shivji. What is the comparison between me and Shivji? And Shivji was like almost like half defeated only. So this is all because Krishna has empowered me to do these wonderful things. Then one day, horses in the battlefield. Whole day the horses, they are running, and the horses, they get exhausted, and if they get exhausted they might fall down out of chakkar aake gir jayenge. So it is very important to give water to the horses on a regular basis. Continue बीच में देना पड़ता है. लेकिन it is very dangerous also because पानी देने जाएंगे तभी attack हो जाएगा. But he's mentioned that also. Arjuna mentioned that also. I went down to give water to my horses, but that time these warriors, they would have immediately killed me. But just because Krishna was there on my side, he protected me. What did Krishna did? Krishna, he made all the soldiers blinded. They were all blinded. They were not able to see for some time. इतना धुआं उड़ा कि कुछ भी नहीं दिख रहा था. And then in the meantime, Arjuna gave water to all the horses. So बोल रहे हैं कि ये कैसे possible हुआ? This was all possible because Krishna was there with me and I was able to do all this thing. So Krishna, it is the mood
of a Krishna. This is the mood of a Krishna. He always like to give credit to his devotees. He will do all the things, but he wants to give credit to his devotees. Doesn't want to take any credit. So he told Arjuna also, in the Bhagavad Gita, you can see that, you fight and you take the credit. I've already killed all these warriors. You just become an instrument and just kill all these warriors. So ऐसे Krishna ने बताया Arjuna ने फिर, he was ready to fight. So we can understand here, Arjuna was not attached to Krishna, not the things which he was empowered. Arjuna was attached to Krishna actually. He was not attached to the things which he has received from Krishna. He was attached to Krishna. So even though Krishna ने अगर ले भी लिया ना, तो भी अर्जुन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. That's why we should always attach ourselves to Lord Krishna, not the things which Krishna has given us. बहुत कुछ कृष्ण देंगे, हमें facilities देंगे, हमें बहुत कुछ चीज देंगे. So we should not be attached to those things. We should be attached to Krishna. We will be in a safe place then. Otherwise, then these things, if they are taken away from Krishna, then we will then lament, oh, what is this? How come, Krishna can take away all these things he has given? So it is, I should have this thing. Why he's taking? So ऐसे बाद में हो जाएगा. So that's why we should be attached to Krishna. That's what we are going to see in this today. So today's shloka, so this is a Pandavas retired timely, they are all going. So this is a shloka. So हम नृपेंद्र रहिता पुरुषोत्तमेन साख्य प्रियेन सुहृद हृदयेन शून्य अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम अंग रक्षम गोपे रसद्भीर अबले विनिर्जितोस्मि. What is the translation? O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher, the Supreme Personality of Godhead, and therefore my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel cowherd men, while I was guarding the bodies of all the wives of Krishna. So, keh rahe ki I am in separation from Krishna. You can see Arjuna is crying in separation from Krishna. Tears are rolling down from his eyes while he is telling this to Yudhishthira, that that Krishna, our friend, our brother, he has left this planet. He is no more there in this world. And because he has gone, he has taken all his powers. All his powers. एक श्लोक में तो आगे अर्जुन ये भी कहते हैं I am cheated. I thought that I am the most powerful warrior in the entire creation. Nobody can defeat me. I was having this illusion. But as soon as Krishna has gone, now I understood that I don't have any power. Yudhishthira बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले कि ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ because while I was bringing this Krishna's wife, कितने सारे wives थे? 16,108 wives. ने पूरा एक lot एक साथ लेके आ रहे थे अर्जुन. तो he was alone. And Arjuna was such a warrior that he can आराम से वो तो protect कर देंगे, पूरे सबको हरा देंगे वो एक साथ. लेकिन but some, he said, अबलेव विनिर्जितो. अबलेव means क्या है? Insignificant, infidel cowherd men, they came. कुछ 4-5 ही लोग थे. वो लोग आए, मुझे डिफीट कर दिया और सारे रानियों को लेके गए. सोचो ये हालत हुआ मेरा. That same Arjuna, who defeated so many demigods, and I got defeated now from these ordinary cowherd men. All my power is lost. I am cheated by Krishna. So like that he's saying. And he's also saying that, that he's in separation from Krishna. Because Krishna has left the planet, and I am not able to tolerate that, Krishna has left this planet. This is the nature of a devotee. They are very much attached to Krishna. Very much attached. They cannot live without Krishna. They, their only goal and only purpose of life is to live for the happiness of Krishna and live for the pleasure of Krishna. Nothing else. Krishna चले गए मतलब उनका सारा जान, उनका सब कुछ चला गया. Nothing is remaining. The same situation was there with the gopis. Gopis also, you see, they were also in separation when Krishna left Mathura,
and he went to Mathura from Gokul. So there, he used to perform pastimes with gopis, and then suddenly Akrura took Krishna away, and they were in so much pain, so much suppression. They were thinking that we will die now, but just only because Krishna has promised us that he will come back, we are keeping our life. Otherwise, out of suppression, we would have died any moment. That moment only, as Krishna has left, we would have died. But just because Krishna has promised, we are keeping our life. So that, Krishna, when he comes, he should not say, oh, kidhar gayi gopis? Where are my gopis? That's why we are keeping our life. So, ये gopis का separation अगर जानना है, I have seen sometimes, one lady on Jew beach, she was coming and she came and she asked one of the devotee, एकदम आंखों से आंसू बहते हुए, have you seen my dog? Have you seen my dog? My dog, I don't know, and she's running here and there, helter skelter, she was running here and there, and the devotee and we, we are seeing, so much attached to dog, and she will die if she doesn't get dog. So that devotee, he said, same the gopis, jo bhav Krishna jab chale jate the, wo jo suppression hai na, I can see some tinge, in this lady. वो suppression में, she is getting mad. Gopis भी यही करते थे. Each and every plant, tree, सबको पूछते थे, have you seen Krishna? Have you seen Krishna? पत्थरों को पूछते थे, dog को पूछते थे, deer को पूछते थे, जो भी दिखा उनको सबको पूछते थे, have you seen my Krishna? Have you seen Krishna? So like that, gopis were going mad. So this is like Krishna, ये तो एक reversal जैसा हो गया. Why Krishna bring reversals in the life of devotees? Itna powerful Arjun, or suddenly, he doesn't have any power. ऐसा क्यों? Why Krishna bring distress or reversals in the life of devotees? क्यों लाते हैं? कुछ idea है? कुछ मेरे को बता सकते हैं आप? Why he bring distress in the life of all the devotees? कुछ point? क्या जरूरत है? क्या? To make him more humble. Very good, very nice point. To make him more humble, or yes, to make us realize this world is temporary. Very nice. Or kuch? To take shelter of Lord. Very nice. Or remember him. So Krishna does this purposely. He brings this stress or reversal in the life of devotee. जब वो देखते हैं that when he sees his devotees is puffed up. This is one point. जब देखा कि इसके अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया है, मैं सबसे बेस्ट डिवोटी हूँ यहाँ पे, BYC में सबसे बेस्ट और सीनियर मैं हूँ, nobody is there and I am the best devotee, serving बहुत अच्छा करता हूँ मैं, everybody praises me, सबसे best. So when Krishna sees that my devotee is puffed up, तो वो तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाते हैं, so that उसको वापस ठिकाने लाने के लिए. Second, when he sees his devotee is not making any spiritual progress, स्थिर हो गया है अपनी भक्ति में स्थिर क्या पे, वहीं पे उसी जगह पे वहां पे स्थिर हो गया, is not going ahead, is not falling down, he just स्थिर हो गया, is satisfied. जब देखते हैं कि भक्त जो है एकदम satisfied हो गया है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी आगे बढ़ने की, devotees they should always think that he wants to advance further in spiritual life, he wants to go ahead. ये devotee का हमेशा एक ये रहता है, he wants to go ahead, doesn't want to be stuck over there, doesn't want to be satisfied. मेरे काउंसलर थे बहुत पहले, when I started my spiritual journey, Praneshwar Prabhu, his grace Praneshwar Prabhu. So I was not coming for any programs, और एक ही चीज करता था मैं, सिर्फ मैं मंगल आरती जाता था, to go for मंगल आरती because I used to enjoy that. And बाकी क्लास बेस मेरे को मैसेज आते थे, मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था उसमें, used to हाँ मैं आऊंगा, और मैं नहीं जाता नहीं था. So मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद भूल गया क्यों दे रहा था मैं एग्जांपल, why I was giving this example.
हाँ हाँ, स्पिरिचुअल स्टक हो गए, satisfied, they are becoming devotees, they have become satisfied. तो satisfied मतलब मेरे काउंसलर बोले कि तुम आते नहीं, no I am coming for मंगल आरती, I am chanting, you are satisfied, you are satisfied, and that is, you are never going to grow in spiritual life, you will be stuck over there, you come for the next 20 years 30 years, but you will be stuck because you are satisfied. तो उनका कहने का उद्देश्य ये था कि डिवोटी को नेवर ही शुड बी सेटिस्फाइड जो कर रहा हूँ, he should always ask for more services, he should always ask for be ambitious in his spiritual life, कि और क्या करूँ, और अच्छे से मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, और मैं अपने चैंटिंग को कैसे सुधारूं, और मैं अपने सेवा को अच्छे एटीट्यूड सर्विस एटीट्यूड में कैसे लाऊं, they are always devotees, they are meditating upon it. They are never satisfied, चल रहा है, no problem, कुछ टेंशन नहीं है, like that devotees should never be like that. तो जब भगवान देखते हैं कि ये स्टक हो गया अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, then he will, Krishna will bring distress or reversals in his life, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा. थर्ड, ये बहुत स्पेशल है, विदाउट एनी रीजन, आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, कोई रीजन नहीं है, भक्त एकदम अच्छे से भक्ति कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और सडनली बहुत सारा प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रप्शंस और सो मेनी प्रॉब्लम्स, कैसे एकदम अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, बट सो मेनी प्रॉब्लम्स केम, क्यों? बिकॉज दिस इज आउट ऑफ मर्सी, कॉजलेस मर्सी, यू से कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा मतलब उसका कोई कॉज ही नहीं है, भगवान को इच्छा हुई ये भक्त बहुत अच्छा है, चलो इसको मैं कृपा कर देता हूँ, तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स डाल देंगे, सो लाइक दैट. तो डिवोटीज के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, एक तो होते हैं निवोफाइट और एक होते हैं एडवांस. You know the meaning of advanced devotees, the very senior, exalted. You know the meaning of neophyte? कौन? हाँ? नहीं. Neo means new, and fight, they're always fighting. Neophyte, because they are new, they are always fighting with devotees, with other people. Not cool. That's why name neophyte. ये मैंने बनाया है. नियोफाइट है मतलब वो नया है. So neophyte के life में when problem comes, it is because for his purification. Krishna puts problem because so that he can be purified और भक्ति करने लगे अच्छे से. और एडवांस डिवोटी के लाइफ में लाइक महाराज और बहुत सारे जो सन्यासी ये सब होते हैं, उनके लाइफ में जब प्रॉब्लम आते हैं, हम देखते हो how come he is such a pure devotee practicing from so many years, how come he is suffering from this thing, question आ जाता है कभी कभी दिमाग में, क्यों? Krishna says that it is I want to give lessons to other devotees so that I know, that's why I put for other devotees to learn some lessons, these advanced devotees they get some distress. So वैसे है. तो भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे भक्त के अंदर एक मतलब प्राइड आए, कोई घमंड आए, अगर आता है तो इमीडिएटली he will put some distractions or something, कुछ problems डाल देंगे. Same happened with Narad Muni. Narad Muni once he was doing very nice bhakti, nice tapasya, इतना नाम होने लगा कि ये इंद्र जो है ना, उनको लगा कि he is going to take my place. कोई भी अगर थोड़ा भी भक्ति आगे करता है, अच्छा तपस्या करता है, दिमाग इंद्र का खराब हो जाता है. What is this, this Narada will take my place, so कुछ भी वो ऐसे ही लेता है हमेशा, नारद में, सॉरी इंद्र. तो उन्होंने कामदेव को बुलाया, कामदेव, we have a task now. Now what this Narad Muni is going to take, doing tapasya, a lot of tapasya, everybody is praising him and he will take my place. I have doubt in him. So you do one thing, उनके हृदय में काम वासना उत्पन्न करो. तो जो आ गया, इमीडिएटली काम वासना उत्पन्न करने के लिए कामदेव चले जाते. एक बार उन्हीं के बोलने पे went to शिव जी, और शिव जी ने उनको ट्राई किया, मतलब इन्होंने ट्राई किया शिव जी को ये करने के लिए, और तुरंत जल के भस्म हो गए. तो थर्ड आई खुल गया. तो थोड़ा से डरे हुए थे, बट इफ ही डजंट रिस्पेक्ट और फॉलो द ऑर्डर, देन इंद्र विल गिव सम पनिशमेंट, सो ही वाज अफ्रेड. लेकिन ठीक है, बोला ठीक है चलो. तो ही वेंट एंड नारद मुनि जहां पे थे, तो एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया, ब्रीज,
ठंडी ठंडी हवाएं और बादल, एंड दिस वेरी वेरी रोमांटिक एकदम एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। एंड लेकिन फिर भी नारद मुनि ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने देखा ये कामदेव मुझे व्हाट इज दिस व्हाट सम चाइल्ड इज ट्राइंग टू पुट मी इनटू इल्यूजन व्हाट इज कामदेव, जाओ चलो कुछ नहीं हुआ तुमसे। सो लाइक दैट बात फैल गई एंड इनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया कि इंद्र ने मुझे ट्राई किया गिराने के लिए लेकिन मैं नहीं गिरा। सो ही वेंट टू शिवजी, पार्वती ऑफर हिज ओबेसेंस। ही सेड कल का न्यूज़पेपर पढ़ा? तो क्या, अरे नहीं पढ़ा, उसने देखा नहीं, बोला इंद्र ने ट्राई किया, मेरे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, मैं वैसे के वैसे था, आई डिफीटेड हिम। तो शिव जी समझ गए, तो प्राइड आ गया इसके अंदर। वेरी गुड नारद। सो चले गए, ब्रह्मा जी को भी सेम बताया, न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं कल का? तो ब्रह्मा जी भी समझ गए, बेटे में आ गया थोड़ा प्राइड। एंड देन ही वेंट टू विष्णु, विष्णु के पास गए और विष्णु को भी सेम बताया, प्रणाम किया और बोला कि कल का न्यूज़पेपर पढ़ा कि टाइम्स ऑफ इंडिया? बोले क्या हुआ? बोले कि इंद्र ने ट्राई किया, कामदेव सब फेल हो गए दोनों, कुछ नहीं कर सके मेरे को, एकदम स्थिर था मैं। बोला वाह वेरी गुड। सो इमीडिएटली कृष्णा अंडरस्टूड दैट ही हैज डेवलप्ड सम प्राइड। तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। नारद मुनि वेंट, तो एक राजा ने बुलाया और प्रणाम देने के लिए, प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए नारद मुनि को इनवाइट किया। तो अपनी बेटी को बुलाया, नारद मुनि के चरण धोए और वो लड़की ने सिर्फ ऐसे प्रणाम किया और आंखों में आंखें डाली नारद मुनि के। एज सुन एज नारद मुनि सॉ द ब्यूटीफुल आईज एंड ब्यूटीफुल दैट लेडी, पूरे एकदम भ्रमित हो गए। बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाल कपड़ा पहना क्यों है मैंने, व्हाई आई शुड वेयर दिस, रियल हैप्पीनेस टू इज देयर इन गृहस्थ आश्रम, व्हाट इज दिस, व्हाई आई एम ब्रह्मचारी, कोई अगर डिजायर मेरी बची लाइफ में, आई वांट दिस लेडी, इमीडिएटली ही थॉट, आशीर्वाद दे रहे थे लेकिन अंदर ही वाज थिंकिंग लाइक दिस। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा, उनके राजा ने, उनके फादर ने, कि इसका कल स्वयंवर है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। बोले स्वयंवर मतलब मेरा नंबर नहीं है? बोला मेरा तो आना ही चाहिए पहला नंबर। तो इमीडिएटली ठीक है, आई एम ब्लेसिंग हर दैट शी विल गेट बेस्ट हस्बैंड। तो चले गए विष्णु के पास एंड ही टोल्ड विष्णु कि भगवान कृष्णा, ये लाल कपड़ा बहुत टाइम से पहना, अभी थोड़ा बोर हो गया, कुछ चेंज चाहता हूं मैं लाइफ में। बोले क्या हुआ? बोले कि लड़की पसंद आ गई, तो आई वांट टू गेट मैरिड। तो लेकिन ये ऐसे बॉडी में ना, वो इतने सारे लोग आएंगे, मेरे को पसंद नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देगी, स्वयंवर है, मेरे को बहुत लड़की पसंद आई। बोला अच्छा तो क्या चाहिए? बोले कि आपके जैसा रूप चाहिए मुझे, आपके जैसा। तो उन्होंने बोला मेरे जैसा रूप? बोला हाँ, आप इतने सुंदर हो कि आपको कोई मना कर ही नहीं सकता। तो ओके, तास्तु, यू विल गेट फेस लाइक मी, बॉडी लाइक मी। तो तो स्वयंवर में दूसरे दिन कृष्ण भी चले गए वहां पे। एंड उन्होंने देखा विष्णु गए, वो तो ऑलरेडी चले गए, तो वो मर्सिडीज में गए, ये लूना में गए, पीछे पीछे पीछे। एंड देन वो स्वयंवर में पहुंच गए, सब लोग गए और उस हार माला सब देखे, वो सब जगह पे जा रही थी। एंड नारद मुनि कंप्लीटली एंड बाजू में विष्णु, बाजू में विष्णु और यहाँ पे वो नारद मुनि। तो he was completely confident that मेरे गले में ही हार डालेंगे, बिकॉज विष्णु का फेस मिला है मुझे, ब्यूटीफुल फेस लाइक विष्णु। सो सब जगह पे ऐसे करते हैं। फिर नारद मुनि गए, तो नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं उसने, एंड शी वेंट अहेड। ऐसे कैसे, मुझे देखा भी नहीं, इतना ब्यूटीफुल फेस, और बाजू में जो विष्णु थे उसके गले में हार डाल दिए, व्हाट इज दिस, ऐसा चीटिंग कैसे कर दिया मेरे साथ, एंड देन वो चले गए, कृष्णा चले गए, उसको अपनी वाइफ को लेके चले गए। एंड नारद मुनि इज थिंकिंग ऐसे कैसे, ये कैसे हो गया मेरे साथ। एंड जो वाइल गोइंग ही वाज सीइंग, और एक नदी दिखी उसको, नारद मुनि ने सिर्फ अपने आप को देखा, तो बंदर का मुंह उसका। नारद मुनि वाज हैविंग फेस लाइक अ मंकी, पूरा बॉडी उनका कृष्ण की तरह था लेकिन फेस जो था वो बंदर की तरह था। एंड ये तो चीटिंग है मेरे साथ, ये तो चीटिंग हुआ है। एंड देन ही वेंट टू कृष्णा एंड ही सेड व्हाट इज दिस, यू चीटेड मी।
And but in that meantime, he came into his that consciousness. He understood that he got puffed up, and because of that, मुझे कृष्ण ने ये सबक सिखाया. तो बाद में बोला कि अभी भी शादी करनी. नहीं, वो मैं अकेले ब्रह्मचारी ठीक हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, कोई झमेला नहीं है, फैमिली नहीं है, जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, आई एम हैप्पी डूइंग योर कीर्तन, तो मुझे वैसे ही रहने दो और कृपा करो कि मेरे अंदर कभी भी ऐसा प्राइड ना आए. एंड देन कृष्णा ब्लेस्ड हिम. तो ये था, मैंने चालू ही नहीं किया. तो ये बंदर का मुंह, नारद मुनि का पूरा बॉडी एकदम विष्णु की तरह बिल्डर और मुंह बंदर का. So so like that, we see many instances where these demigods were bewildered by the Maya of Krishna. One day, Brahma came to Vaikuntha and Jai Vijay ko bola कि I want to see Lord Vishnu. Can you allow me? Like wait, we have to go and take permission from him if you want to go inside. Okay, go ahead. तो अंदर गए और विष्णु को बताया कि ब्रह्मा आए आपको मिलने. And what did Krishna said? Which Brahma? Which Brahma? तो वो आके बोले कि कौन से ब्रह्मा आप? What question is this? I am Brahma, मतलब creator of this universe. Four-headed Brahma क्या? जाके बोलो. तो वापस गए, बोले कि four-headed Brahma. बोले कि four-headed Brahma, ओके ठीक है, अंदर भेजो. तो विष्णु को देखा, प्रणाम किया. सब विष्णु ने पूछा कि कैसे चल रहा है लाइफ और एवरीथिंग, सब कुछ चल रहा है ठीक? बोले कि yes. Then he said, I am confused, Lord. Then why you said that, that which Brahma? And so he was a little puffed up, which Krishna understood. So immediately Krishna called all the Brahmas. आप देख सकते हो कि उन्होंने वहां पे millions of universes are there and millions of Brahma came, and our Brahma was very tiny Brahma, was having only 4 heads, but other Brahmas were having 10 heads, 20 heads. Some were having 100 heads, 1,000 heads, lakh, 10 lakhs, crores of heads. And that so many heads, that much complex the universes. उतना छोटा यूनिवर्स होता है, उतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है ज्यादा हेड होने से, बिकॉज ज्यादा दिमाग चाहिए वो यूनिवर्स को बनाने के लिए. So many Brahmas came, and when Brahma saw this, he got bewildered. और सब लोगों ने एक साथ प्रणाम किया, सबके मुकुट एक साथ जमीन पे लगे and made the tumultuous sound which sounded like a kirtan. And जब उन्होंने देखा वो एकदम bewildered हो. और कुछ समय के बाद उन्होंने देखा वो सारे ब्रह्मा जो है वो विष्णु के रूप में मतलब manifest हुए. They all took the form of Vishnu. Similarly, the same thing we saw that जब ब्रह्मा ने देखा कि सारे बच्चे को तो अभी मैंने चुराया था, and how come they are still there? तो वापस जाके देखते हो बच्चे उधर भी है, वापस आके देखते बच्चे इधर भी है. And suddenly all the boys, cowherd boys, they took the form of Vishnu, 400 Vishnu forms. तो ब्रह्मा bewildered हो जाते हैं. So like that. So प्रभुपाद जी बताते हैं कि if we are getting some facilities in this world, हमारे अगर कुछ facilities मिले, it is our duty to use it properly. Otherwise Krishna will take it away. Krishna has given all the facilities to us, but if we misuse, Krishna will take it away. प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल हमेशा कोट करते हैं एक साधु का. You must be knowing this story that एक चूहा आया, उन्होंने साधु को कहा कि I want I have some problem. What is the problem? This बिल्ली मुझे हमेशा पीछे लगती है मेरे खाने के लिए. तो what do you want? I want to become cat. Okay, become cat. तो cat बन जाते हैं. कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं, बोलते कि मुझे अभी क्या प्रॉब्लम हुआ? बोले कि अभी कुत्ता पीछे लग रहा है, तो आप मुझे कुत्ता बनाओ. तो फिर उसको कुत्ता बना देते हैं. And then after that he comes back again and he says, what happened now? बोले कि टाइगर और वो सब मेरे को खाने के पीछे दौड़ रहे हैं, तो अभी क्या चाहिए? बोले टाइगर बनाओ. तो टाइगर बन जाते हैं. तो टाइगर बनने के बाद वो टाइगर he starts staring at the sadhu only, like that. He is making sound. और ऐसे साधु बोले कि what do you want? You want to eat me? Yes, I want to eat you. So immediately he said,
become a mouse again. Punah mushika bhava. Then become a mouse again. तो प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल बता दे. What is the lesson from this? क्या समझ सकते हैं हम लोग इससे? बताओ. उसको वापस माउस बना दिया. उससे क्या पता चलता है? How it can relate to our life? Yes. हाँ, ओके. और कुछ? सो प्रभुपाद सेज दैट अगर जब मिसयूज करते हैं ना तो वो सारा भगवान ले लेते हैं. मतलब वापस जहां पे शुरू किया ना वहीं पे छोड़ देते हैं. वहीं पे सारी फैसिलिटीज मिली है, अच्छे से घर और वो सब मिला है, लेकिन जब देखते हैं फायदा नहीं उठा रहा है उसका तो सब कुछ ले लेते हैं. पुनः मूषक भव, मतलब वापस माउस बनो, मतलब वापस उसी सिचुएशन में आ जाओ, 84 लाख योनि में चले जाओ. Because now you have got this human form and you are not utilizing it properly, become mouse again. The human form, when we have got, we have to be very serious. Only human being can do bhakti. No other living entity can do bhakti. So कृष्ण जो है ना हमेशा अपने डिवोटीज के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे रिवर्सल्स, कुछ प्रॉब्लम्स लाते हैं so that he can grow. तो कृष्ण डिवोटीज भी जानते हैं कि कृष्ण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डालेंगे. तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि देखो कृष्ण आपको प्रॉब्लम देना भी है ना तो ये चलेगा. हाँ, ये मेरा लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं. डिवोटी दे हैव देयर ओन लिस्ट कि बाबा के ये प्रॉब्लम है तो एक्सेप्टेबल है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ है तो नो नो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट प्रॉब्लम इज दैट कृष्णा हैज हिज ओन लिस्ट. वो अपना लिस्ट देखेंगे, ओके ये प्रॉब्लम है तो कृष्णा उसको फाड़ के फेंक देते हैं. अच्छा ये प्रॉब्लम, बोलेगे नहीं मेरे अलग प्लान है which I have, which I will put, and which we don't understand. And then we ask why this is happening. So कुछ भी होता है डिवोटीज के लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है हमेशा. So what happens when things are not going our way? जब तो भगवान जो है ना वो प्रॉब्लम्स डालते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं डालते जो हम चाहते हैं. He puts those problems which we don't want. And जब व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो क्या होता है? What happened? If not, then we become angry, we become revengeful, we fight, we give up, we become distressed, we commit suicide, we withdraw from the society. These are few things I mentioned. जब things doesn't go our way, तो ये चीज होता है. लोग एंग्री होते हैं, डिवोटीज के ऊपर ही एंग्री होते हैं, घर वालों के ऊपर एंग्री होते हैं, नेबर्स के ऊपर एंग्री होते हैं. They don't understand that they cannot see the hand of Krishna. They cannot see hand of Krishna. Devotees always see hand of Krishna in every place. कोई अगर आके इंसल्ट भी कर रहा है ना, तो immediately devotee understand ये तो भगवान ने भेजा है. Krishna has the strings. वो जैसे नचाते हैं वैसे वो कौन होते हैं नीचे, तो कठपुतलियां, डॉल्स, तो वो नाचते हैं वैसे ही. सिमिलरली कृष्णा ऐसे स्ट्रिंग को खींचते तो वो अपने को आके he will insult, he will criticize, he will blaspheme. तो कृष्णा ऐसे करते हैं जानबूझ के. But devotees, they understand, this is the hand of Krishna. And we have to pray to Krishna, let me understand, in every situation your hand is there, your plan is there. So, but non-devotee means devotees who are not advanced, they don't understand this. And they become angry. They're revengeful. Revengeful means, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको देख लूंगा. This is not devotees. They are never revengeful. ठीक है, किया मेरा ही कर्मा है जो मुझे दिया है. शायद मैंने पिछले जन्म में किया होगा उसके साथ. वो अभी मेरे को रिटर्न दे रहा है. Why I should be angry on him? It is my mind who is disturbing me. It is not, he is becoming, creating problem in my life. It is my mind जो मुझे इतना false ego है, उसके वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ. We fight, we give up, छोड़ देते हैं भक्ति. We become distressed, suicide, बहुत लोग suicide करते हैं, withdrawal from society. So, but devotees का अलग होता है. प्रभुपाद बताते हैं कि जब आप भक्ति में आते हो, it is like going to the hospital. It is not like, कि आप लोनावला या कोई पार्क में आए हो.
We are coming in a hospital when we are becoming devotees of Lord Krishna. तो कृष्ण के पास सब कुछ है, इंजेक्शंस, सीजर्स, तो क्या क्या है, सब कॉटन, इज लाइक बेस्ट डॉक्टर, कृष्णा इज द बेस्ट डॉक्टर. तो ये सब कुछ यूज करेंगे भगवान. He will use all this to make us grow in our spiritual life. If need is there, अगर देखते कि इतना जरूरत नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत है तो फिर वो यूज करते हैं. प्रभुपाद बताते हैं, it is like hospital. When you are coming to this ISKCON temples, they are like hospitals. You are coming here to cure your diseases. You are already diseased, that's why you are here. Now your disease will be cured when you start performing devotional service. So हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, बहुत सारे अवगुण हैं. We are so much proud, we have so much ego, false ego, anger है, बहुत सारे problems. तो वो इधर आते हैं हम लोग, ये हॉस्पिटल है जो भगवान ठीक करते हैं. पहले तो हम ठीक रहते हैं, पहले when you are not in the hospital you are fine, but when you enter the hospital then you will start feeling that pain, क्योंकि आपको अंदर लेंगे और अंदर लिटाएंगे और फिर वो सब ऑपरेशन काटेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से ऑर्गन निकालेंगे, वापस डालेंगे, फिर सिलेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो बहुत पेन होता है. तो वो बोलेंगे कि पहले अच्छा था, मैं बाहर था, ये हॉस्पिटल में आने के बाद और तकलीफ बढ़ गया. Devotees might say, मैं भक्ति में नहीं था ना, वो अच्छा था. I was so happy before, but now I've come here, कितने प्रॉब्लम्स है लाइफ में, so many problems are there. ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए, पहले इतने नहीं थे प्रॉब्लम्स. तो वो भगवान के प्लान है. Lord Krishna is working on us. That's why these problems are there. तो अर्जुना, he is always thinking like that, कि कृष्ण जो है मुझे ट्रीटमेंट चालू है मेरा. He never became angry with Krishna. So as a devotee हम लोग बोल सकते हैं कि what we think as a devotee, we say कि मैं 16 माला रोज कर रहा हूं, मंदिर में आ रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, हर सैटरडे को मैं बैठता हूं क्लास में, और जो भी प्रभु जी सेवा देते हैं वो मैं करता हूं या करती हूं अच्छे से. तो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए. देयर शुड बी गुड हेल्थ. हेल्थ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एकदम हेल्थ परफेक्ट होना चाहिए ताकि मेरी भक्ति ठीक रहे. Otherwise we'll question, oh Krishna, I'm serving you, I'm doing devotional service, how come you can put so many problems or so many diseases in my life? What is the need? I'm doing bhakti. We might question, but we as a devotee we might think on a neophyte level कि मेरा हेल्थ ठीक होना चाहिए भगवान, क्योंकि मैं आपका जप कर रहा हूं. But this is not so. Devotees, they never desire for this. They may work on their body for so that they can keep healthy, so that they can serve Krishna nicely. But they do not expect this from Krishna. They do not expect anything from Krishna. I am doing business, oh Krishna, I'm doing it for you, I'm offering it to you, some portion of my hard-earned money, so my business should flourish. There should be no loss. Devotees might say like that. और बोलते ही and then when there is no, ऐसे कैसे, मैं तो भगवान के लिए आधा पैसा भी, अगर डोनेशन भी कर रहा हूँ, सब अच्छे से डोनेशन हर महीने या फेस्टिवल्स में दे रहा हूँ, मैं कलश भी कर रहा हूँ मैं, why this is happening? So this is all neophyte stage thinking कि मेरा सब कुछ ठीक होना चाहिए लाइफ में. अर्जुना की लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, रिवर्सल. आके वो लोग उसको हरा के चले गए. बट इज नॉट, व्हाई कृष्णा यू हैव डन. पहले तो इतना अच्छे से मैं फाइट कर रहा था, इतना नाम था मेरा, बदनाम कर दिया मुझे आपने, तो अभी लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. ही इज नॉट ब्लेमिंग कृष्णा फॉर एनीथिंग. फिर रिलेशंस, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, रिलेशन शुड बी नाइस. मेरे वाइफ मेरे से एकदम अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हस्बैंड भी मेरे से एकदम अच्छे से बिहेव करना चाहिए. All my relatives, all the devotees, they should respect me for what I am. They should honor me. कि हम लोग, this is a neophyte stage. हम लोग expect करते हैं कि मुझे respect मिले, मुझे honor मिले, relation अच्छे से चले. We expect this thing from Krishna.
subtle inside is there. आगे people should honor me, that we saw. But लेकिन problem क्या है, अगर कृष्ण ने ये सब कुछ दे दिया हमको, if Krishna give all this thing, then what is the problem? क्या होगा? Anybody can say. अगर एकदम हेल्थ अच्छा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशंस एकदम अच्छे चल रही है, सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस एकदम फ्लरिश हो रहा है, क्या होगा? Then we will remember Krishna, but we'll become complacent. We'll become complacent. We will hardly grow in our spiritual life. We'll not make any progress. Because कोई रिवर्सल्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, इसीलिए हम लोग कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम लोग वहीं पे वहीं रहेंगे. We hardly will make any progress. So we should accept it as a grateful heart. Some problems which are coming, this is Krishna, you are so kind, you are so merciful that you are putting these obstacles in my life, you are putting these problems in my life. Devotees, they are grateful. You see Kunti Maharani, so many problems she got in her life. एक बार भी कृष्ण को बोला नहीं, कृष्णा मैंने तो लिस्ट बनाया था, ये आपने तो कुछ और ही प्रॉब्लम्स दिया. No, she said vipada santuta tatra tatra jagadguru. You know, she's saying, you know, all, you know, these problems, you please give again and again, again and again. All this problem, let it be come again and again in my life. Why? Because of that, we always remember you. We always see you. And because we are seeing you, there is no chance that we will see again we will take darshan of the birth and old age and disease in the next life. Just because we are seeing you every time. Because we are remembering you. Kunti was grateful. Problems are devotees, they are grateful. They are not blaming Krishna. What is this, Krishna? So, Khatwang Maharaj also, you know the story of Khatwang Maharaj. He was a great warrior. Demigods came to Khatwang Maharaj और उन्होंने कहा कि demons को हराने के लिए मदद कीजिए हमें. तो डेमिगॉड्स उनको लेके गए, ऊपर फाइट चल रहा है, लेकिन जो आयु होती है वो उधर का ज्यादा होता है. लाइक 6 months is equal to 1 day in मतलब यहाँ के 6 days, 6 months, वहां का 1 day. So like that, he spent so many days over there. तो उनकी आयु almost like खत्म हो गई थी. And he fought for many years. वो और फिर demons को हरा दिया. Khatwang Maharaj was great warrior. फिर demigods they become happy. They asked कि क्या चाहिए बताओ, हम बहुत खुश है आपको देंगे. उन्होंने क्या कहा, क्या मांगा उन्होंने? Tell me that कितना समय बाकी है मेरे जीवन में. How much time is left in my life? तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला 1 moment. You have only 1 moment left in your life. Immediately Khatwang Maharaj उन्होंने what is 1 moment? इतना इनके लिए फाइट किया, इतना ये किया, उन्होंने 1 moment बोला कि चलो भक्ति में लगते हैं. Immediately he started meditating on the Supreme Personality of Godhead, and in that moment he accepted with the grateful heart. He went back home, back to Godhead. Just because he accepted, he did not blame, or he does not blame Krishna. He accepted. That's why he went back home, back to Godhead in 1 moment. He attained perfection. He remembered Lord Krishna. So these are devotees. They are always satisfied and not thinking that why this is happening with me. So Brahma, this Brahma, Brahma also, he prays in it is there in Brahma Samhita and Srimad Bhagavatam, actually 10th canto, there is one shloka where Brahma is praying this. What is praying? Tate dukampan susamikshamanu bunjana evan gatitam vipakam yadvagapurdhir vidadham namaste jivet yo mukti pade sadaya bhav. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. क्या मीनिंग है इसका? कहते हैं कि devotees के life में there will be so many problems, but he doesn't blame Krishna. He says, oh Krishna, you are so kind, I deserve so worse, but you are so merciful, you have given me some small portion to suffer.
I would have, my karma is such like I can suffer a lot, but because of your kindness, you have given me some portion. So I am suffering. And with this grateful heart, he bows down to Krishna. With his words and body, he worships Lord Krishna. Brahma says that alone is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Such a person only can go back home, back to Godhead. Such a person, only, no other. Those who are grateful, whatever happens in the life, Krishna, he say thank you to Krishna. Whatever bad happens, he blames himself. ये मेरी वजह से. Or whatever good happens, he gives credit to Krishna and his devotees, and all the devotees. Doesn't give credit to himself. मेरे वजह से मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, इतने लोग आ रहे हैं. Never takes any credit for himself. He gives credit to all the devotees and Krishna. But anything bad happens, he gives credit to himself. He blames himself. कि मेरी वजह से हो रहा है. Nobody is responsible. Krishna is also not responsible. No person is responsible for my miseries. So Brahma is saying this, So we see the story of Gajendra. You all know this Brahma, is such a great personality. He's not an ordinary person. He is such person. He is born of the navel from Lord Vishnu. He has life. His life has got 311 trillion years. He is going to live, and he has all the powers. He has got power to create, and all the demigods they are worshipping him. They are bowing down him, and they are obeying him. And Krishna, he just completely made a fool out of Brahma. He made like a fool look in front of all his children and his disciples and all the demigods. He was so embarrassed, Brahma. You know that story that he steal all the all the gopas, and he was completely, and then that Brahma 4 head wale jate wo ek story bataya. So like that, he made complete fool, look fool Brahma in front of everyone. Lekin Brahma ye pray kar rahe hain, such a great exalted personality, he's praying like this. And he's also bowing down in front of Krishna and praising Krishna. Oh Krishna, you are so great that even I am bewildered. So we see reversal in the life of Gajendra. So इसमें से कोई तो एक गजेंद्र है, आप चूज कर लो आपका जो भी बड़ा है. And there was reversal in the life of Gajendra. Who was Gajendra? He was previous life में. He was Maharaj Indradumna Maharaj. एकदम पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के, पृथ्वी के राजा थे. And then he thought, okay, now I have to retire. And he left all the kingdom, handed over all the kingdom to his sons, और उनको कहा कि मैं जा रहा हूं. तो गए जंगल में, तपस्या कर रहे हैं, और वहां पे कौन आए? अगस्त्य मुनि आए. And this Indradumna Maharaj was sitting in tapasya, in deep meditation, and Agastya Muni आए वहां पे, and he thought this foolish person is, purposely he is closing his eyes. He don't want to, he's not respecting me. Actually, at that time, it was very important. Hospitality बहुत important होता था Vedic times. In Vedic times, being hospitable was very, very important. तो पहले के लोग बहुत hospitable होते थे. आप महाभारत में भी, if you see, अगर enemies भी, if they go in the house of enemies, if enemies are also coming in your house, they will be welcomed. फिर उनको पानी देंगे, उनको जगह देंगे, उनको kind words बोलेंगे. तो ये बहुत important था. enemy भी अगर आता है तो ये होता है. So the Rantidev तो एक ऐसे राजा थे. He was not only giving hospitable to only human beings. He was hospitable to even animals, dogs, birds, जो भी आते थे उनको भी एकदम अच्छे से वो hospitality देते थे. Dog आते थे, सारे animals आते थे, उनको अच्छा treatment देते थे.
ह्यूमन बीइंग से जैसे ही कंपेयर करते थे, रंती देवी ना सच। तो उस टाइम पे ना हॉस्पिटैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। एंड दिस अगस्त्य मुनि, यू नो, ही गॉट वेरी एंग्री, व्हाट इज दिस फुलिश किंग, नाटक कर रहा है मेरे सामने, आंख बंद करने का, मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इमीडिएटली ही कर्स्ड हिम दैट बिकॉज यू आर बिहेविंग लाइक अ जड, I will judge, I will curse you that you become jad elephant, you know, mand, and you know who will be dumb elephant. I curse you that you become dumb elephant. तो वहां पे you can see इंद्रदुम्न का क्या गलती था? Was there any mistake? No. ये मैंने वो एग्जांपल में आया, मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ नो रीजन, आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी भगवान प्रॉब्लम्स डालते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, मैंने बोल सकते हैं मैं तो ऐसे बैठा हूँ और ये आके चैंटिंग करते करते कोई श्राप देके गया, व्हाट इज दिस? वैसे ही जस्ट इमेजिन क्या होगा, क्या हमारा क्या रिएक्शन होगा, मेरे आप भी, हम लोग भी कर्ज करना करे शुरू करेंगे उसको। बट यू नो दिस इंद्रदुम्न was very quiet, you know, accepting the reversal gratefully in the life. So Prabhupada was very serious about this thing. He used to say that if anybody comes in the temple, you should not consider them ordinary. अगर कोई guest आता है, you should never consider them ordinary, and you should never neglect them. You should always think that they are sent by Krishna and they are guests of Krishna. They are called by Krishna, and now they are here, and we should welcome them and we should greet them as if they are a guest of Lord Krishna. भगवान के पत्ता भी नहीं हिल सकता, like they are here because Krishna has inspired them to come over here. लेकिन अगर हम उनको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, then they will never come again. कैसे वो डिवोटीज, उनको तो कुछ कैसे रफली बात करते हैं ये वो। So we should be very careful. प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट होते थे इस पे, लेकिन no, you should be very serious. If anybody comes, I guess they should be welcomed nicely. While going, they should feel and motivated or inspired to come back again with your hospitality. तो प्रभुपाद भी इसके ऊपर बहुत ये थे, that we should also learn that anybody comes, we should be, and ये तो वही है, लेकिन बाकी के अगर बाहर भी कहीं पे हम लोग मिलते हैं, we are wearing tilak, we are wearing tulsi mala, we should behave very nicely. If anybody is coming to you and talking to you or whatever, they know that you are devotee of Krishna, so you should behave nicely. Otherwise we are spoiling name of Krishna, we are spoiling name of Prabhupada, we are spoiling name of ISKCON. या ISKCON के devotees मैंने देखा उस दिन गाली दे रहा था सबके सामने, भाग झगड़ रहा था, मारामारी कर रहा था। So devotees, you know, they are very careful in his behavior outside also, because people are seeing him. So hospitality की बात चल रही है, तो यहाँ पे hospitality नहीं किया, and इंद्रदुम्न was cursed. इंद्रदुम्न ने कोई मिस्टेक नहीं किया, परीक्षित ने तो थोड़ा सा मिस्टेक किया था। क्या मिस्टेक किया था परीक्षित ने? सांप डाला था ऊपर, तो फिर वो कर्स मिलना तो जरूर है, बट यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, नो, चैंटिंग चालू था, and he got cursed, but he did not said anything to Krishna, did not blame anything. भगवान का कुछ प्लान रहेगा। Same happened with चित्रकेतु also. भगवान का दर्शन करके आए थे, जस्ट भगवान को आमने सामने देखे थे, yes, give me blessing. वापस जाते जाते on the way पार्वती जी ने कर्स किया to become demon and became Vritrasur, चित्रकेतु महाराज. So and they were happy. Chitraketu was happy. Oh, okay, you have cursed me. This is my destination. This is a will of Lord Krishna. I accept it gratefully, and please give me your blessings. And he went away. And then Shivji said, look at this devotees of Lord Krishna, you know, look at their attitude, look at their devotion. You know, they are not blaming, you know, they don't have any tinge of, you know, they don't have against Krishna that why you have done like that. They're always grateful. So तो कृष्ण ने क्यों किया अर्जुन ये एलिफेंट के साथ, उसको क्यों इतना कर्ज किया? बिकॉज टू फास्टन द प्रोसेस, नहीं तो अगर वो हाथी बन के रहेगा, मतलब शायद कुछ ज्यादा समय लगने वाला था, बट कृष्णा डिड दिस रिवर्सल सो दैट यू नो देयर विल बी, सो दैट ही कैन फास्टन द प्रोसेस. जो भगवान की प्राप्ति है, परफेक्शन है, वो जल्दी कर सकता है. So why Krishna does this?
to break us from our complacency and not be satisfied. So that's what we discussed before. Satisfied नहीं होना चाहिए life में, in spiritual life, and to make us understand the sense of urgency. कि बहुत बहुत urgent है ये spiritual life. The life can get over any moment, anytime we can die. We don't know how many years or how many moments are left in our life. We don't. Urgency. Krishna wants to create this urgency, so he brings so many things in the life. और फिर दूसरे जगह पे थे क्रोकोडाइल. कौन था वो? हु. उसके भाई का नाम क्या था? हाँ, पहले के जमाने में ऐसे नाम होते. हाँ, हु. तो उसमें से एक हु उसने क्रिएट किया था प्रॉब्लम. He was a Gandharva. He was having beautiful body, healthy body. He was having all the mystic. He was a mystic yogi. He can do any miracle. He can go anywhere. He was expert in music. He was expert in dance. No diseases. Can you imagine? ऐसा body था उनका. And suddenly Krishna cursed him. ऐसे situation लाया कि वो कर्ज किया कि क्रोकोडाइल बन गए. कहाँ पे गंधर्व और कहाँ पे क्रोकोडाइल? Crocodile are, basically they are not very beautiful. Nobody will say, कितना cute है. Nobody will say. Only the person who will say this, oh, you are looking good, only दूसरा crocodile बोल सकता है. But no human being can say this. ऐसा रूप होता है उनका क्रोकोडाइल का, बहुत भयानक, एकदम देखना भी नहीं चाहेगा, भागना चाहेगा. एंड वो आप देखोगे कि क्रोकोडाइल कभी ऐसा उनका नेचर होता है, दे आर ऑलवेज अलोन. दे आर नॉट वेरी सोशल. दे आर अलोन एंड दे जस्ट वांट टू ईट. उनका टंग इतना उनका डिमांडिंग, बड़ा टंग है. वी हैव अवर स्मॉल टंग व्हिच इज डिमांडिंग अगेन एंड अगेन. ये खाओ, पाव भाजी खाओ, पिज्जा खाओ, ये खाओ. वी ऑलवेज डिमांडिंग आवर स्मॉल टंग. जस्ट इमेजिन वो इसका इतना बड़ा टंग कितना वो डिमांड करता होगा. सो कंटिन्यू खाता रहता है वो क्रोकोडाइल. सो फ्रॉम गंधर्वा ही बिकेम हु. क्यों? बिकॉज otherwise he would have taken millions of births to attain perfection. millions of births लग जाते थे उस हु को भगवान की प्राप्ति होने के लिए. अभी वो गंधर्व बना है, आगे जाके क्या बनेगा पता नहीं. राइट? वी कैन गो टू दिस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं. वी कैन गो टू हायर प्लैनेट्स, वी कैन गो टू लोअर प्लैनेट्स. हम लोग भी डेमिगॉड्स बन सकते हैं, हम लोग भी इंद्र बन सकते हैं, गंधर्व बन सकते हैं. बट दैट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन. After our pious credits are over, we will be again coming down. Shine punya mrityalokam vishanti. We will come back to our material world on the planet, Earth planet. तो गंधर्व, ये भगवान चाहते थे कि अगर मैं ये नहीं करूंगा इसके साथ, ये हु के साथ, he will take millions of births to attain this perfection. तो कुछ करना चाहिए, इसलिए उसको क्रोकोडाइल बना दी. So you can see this picture. बाद में वो गजेंद्र आए और वो फाइट चला एंड क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ा. एंड दिस वेंट ऑन फॉर हाउ मेनी इयर्स? 1000 years तक वो डेमिगॉड के ऊपर से देखते थे. फाइट चल रहा है, इतना जबरदस्त फाइट चल रहा है. बोले खत्म ही नहीं हो रहा, चल जाके सोते हैं थोड़ा. They used to go and sleep and फिर दूसरे दिन आके वापस देखा अभी तक चालू नहीं था. ठीक है, हाँ अभी तो चलो ठीक है, सो जाते वापस वही. ऐसा 1000 साल तक चला. वो बाहर लेके जाते, फिर अंदर लेके जाते, बाहर लेके अंदर. यही चल रहा था 1000 years तक दोनों के बीच में. वन इज इंद्रदुम्न, वन इज हु, वन इज गंधर्व, वन इज क्रिंग. इंद्रदुम्न वाज ग्रेट डिवोटी. हु तो इतना डिवोटी नहीं थे. अच्छा, हु कैसे बना? उसको ये कर्ज कैसे मिला? क्या किया? वो तो उसको बोलते ना कीड़े. वो एक साधु थे, वो पानी में ये कर रहे और ये पीछे नीचे जाके ऐसे पैर पकड़ रहे उसको. क्या जरूरत है? पैर पकड़ता है, बोला यू बिकम क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल बन गए वो. सो कर्स ऑफ डिवोटीज और साधु सेजेस आर आल्सो वेरी वेरी ग्रेट. तो वो ब्लेसिंग्स होता है जो हम लोग नहीं समझते. तो फिर बाद में जब बिकॉज हु दिस क्रोकोडाइल was taking association in the association of Gajendra,
he also got liberated. तो भगवान ने वहां पे भी उसको पहले उसका सर काटा, he cut his head. पहले उद्धार किसका किया? एलिफेंट का नहीं किया, उसको पहले उद्धार वो crocodile का किया, because he is grasping the feet of pure devotee. तो इसीलिए पहले उसका उद्धार किया, और वहां पे उद्धार भी वैसे, वहां पे भी छीन लिया सब कुछ, डायरेक्ट मेन जो अटैचमेंट सर होता है वही छीन ली, वहीं पे सब कुछ होता है, तो वो ही काट दिया सीधा. And Indradumna, this Gajendra, he remembered, Krishna actually gave him intelligence. Krishna ke dadami buddhi yogam tam matta smritir jnanam apohanam cha. Krishna says, from me come remembrance and forgetfulness. So Krishna mercifully came in the heart and in the mind of Indradumna, this Gajendra, and he remembered all the prayers, some of the prayers, and he offered that one lotus was there, and he offered to Krishna, and he started offering prayers to Lord Krishna. Immediately Krishna came down on Garuda, और फिर वो चक्र से उसका सर काट दिया. So कृष्णा ने दोनों का उद्धार किया. Krishna very merciful to all living entities. दोनों का उद्धार. तू भी आ. So very very merciful. ये कृष्ण के प्लान जो होते हैं ना, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं. It is only because of ignorance we don't remember or we don't understand this. क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? We don't understand. So this is Rupa Goswami. Rupa Goswami बताते हैं कि we must always expect Krishna's mercy, but it is different from what is going on in our mind. Rupa Goswami बताया कि we should always expect mercy, but वो है mercy, हम लोग क्या सोचते हैं कि सब एकदम प्रगति करो, लेकिन उनका kind of mercy is different. Krishna says, when I become very merciful to someone, क्या करता हूं मैं? Krishna says, my first installment of mercy is I take away everything. सब कुछ ले लेता हूं, ये मेरा first mercy है. How many are ready for this kind of mercy? No one? Wow, only 2 hands or 3 hands. बाकी लोग सब लोग डर रहे हैं. नहीं, ये सब नहीं लेने का, थोड़ा थोड़ा लो. अभी तक मैं जिया नहीं हूं अपनी लाइफ अच्छे से, अभी तो बहुत कुछ करना है. So Krishna says 10.88.8 Shri Bhagwan uvacha yasyaham anugranami harishya tad dhanam shanai tato dhanam tyajanti yasya swajana dukkha dukkhitam. Krishna says that the personality of Godhead said, if I especially favor someone, I gradually deprive him of all his wealth. Sara wealth pehle chhin leta. Jad. Then relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress one after another. विदुर जी के साथ हुआ था ये. घर था, पूरा ये था, बाद में देखा तो कुछ भी नहीं है, जंगल में, फॉरेस्ट में, लेकिन कितना फायदा हुआ. He went to Maitreya Rishi, other rishis, and he took, he got self-realization from these sages. So we should, और जरूरत नहीं है कृष्णा सबके साथ करेंगे, जब वो देखते हैं कि कर रहा है सब कुछ ठीक, तो ये सिचुएशन लाने की जरूरत भी नहीं हो कृष्ण को. So but anybody is utilizing things very nicely, तो वो चीज रखते हैं. He will have car. You can see Prabhupada. He was having car. He was having big temples. He was having a lot of bank. पैसा होता था बहुत. तो अगर वो अच्छे से यूटिलाइज भगवान की सेवा में करते हैं ना, तो भगवान देते हैं और देते हैं, ले लो. बट अगर मिसयूज कर रहा है तो सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ. So Prabhupada once, he was cooking puris for Krishna. तो उस टाइम कलकत्ता में जापानीज, they were, वो युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, and they were putting bombs from the sky, और सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग डिस्टर्ब थे कि क्या होगा हमारा, हम लोग मर जाएंगे. And they were running here and there, and they were asking Prabhupada also, Prabhupada, you come with us, bombs are falling, you will die. Prabhupada used to say, you please go, I am busy cooking puris for Krishna. गए नहीं Prabhupada. Prabhupada felt sorry for
these people, but Prabhupada was thinking, oh, Krishna is coming in the form of bomb. Wow. This is the, change in consciousness, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, अगर मरना है तो बन जाऊंगा, अगर नहीं मरना है तो उधर भी किधर भी छुपूंगा, उधर भी मर जाऊंगा. I will be dead, but Krishna is there to protect. So he was busy cooking puris for Krishna. So this is like good bomb, it is just a matter of consciousness. If you remember that this is Krishna's mercy, bomb gira और हम लोग spiritual world में. We are in the spiritual world because accepting gratefully anything happening, not blaming Krishna. Oh Krishna, okay, this will be fine. Okay, Krishna is there. That consciousness, वो consciousness अगर हो तो उसी time पे, he can go back to Godhead. So this story of crocodile and Gajendra is very, very similar and very, very this to us, because we are all in the jaws of crocodile. सब लोग हम लोग crocodile के अंदर हैं. कुछ लोग इतने गए, कुछ आधे बचे हैं. सब लोग crocodile के मुंह के अंदर हैं. That means what? We are in the jaws of Maya और काला, जो हम लोग को धीरे धीरे हमारी आयु को छीनते जा रही है और हमारा आयु खत्म होते जा रहा है. और ऐसे बताया गया है कि ये जब प्रलय होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो एवरीबडी गोज इन अ डीप स्लीप, दैट भगवान के अंदर, स्टमक के अंदर सब लोग ऐसे सो जाते हैं फॉर कल्पस. तो उस टाइम पे भी वो मतलब मुझे क्रोकोडाइल हमारा पकड़ा हुआ है आधा. वी आर इन द जॉज ऑफ क्रोकोडाइल देयर आल्सो. वी माइट फील कि क्या है, मैं तो सोया हूं, लेकिन क्रोकोडाइल ने पकड़ के रखा है. वो बाद में वापस जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट मिलेनियम में, वापस वो वी आर इन द जॉज ऑफ क्रोकोडाइल. So we can only get saved from the jaws of crocodile only by the mercy of Lord Krishna, not by, on our own strength. So if you are sincere, whoever you are, we can attain perfection. If you are sincere, even if you are. So this is the last thing which I will say, and I will finish. So this house, this is Shiva's house, and there was one brahmachari who was requesting Srivas continuously that I want to take darshan of Chaitanya Mahaprabhu dancing. Please take me. Then he said, no, only very, very few devotees are allowed inside. You are not allowed. Then again next day, please take me inside. I want to see Lord. He was begging, and then Srivas said, okay, I will take you inside. Do one thing, I will give you one place. You have to hide. You don't come in front of Mahaprabhu, otherwise he will be very angry. Well, yes, I will hide myself. और फिर ब्रह्मचारी वहां पे हाइड हुए, एंड दान चल रहा था. चैतन्य महाप्रभु immediately stopped the kirtan. He said, I am not feeling ecstasy today, the same ecstasy which I feel every day. Is there someone over here who is not eligible to be here? तो वापस कोई आंसर नहीं, सब लोग डर जाते हैं. He asked Srivas, is there anyone who is not supposed to be here? Yes. There is no atheist, but there is one brahmachari who is a very pure soul, and he's a very good devotee of yours. He's there, and he's very austere. He drinks only milk. He doesn't eat anything. He drink only milk every day. So Chaitanya Mahaprabhu said, get out. Get this brahmachari out of my, this house immediately. What do you think? Just by drinking milk, one can attain me. One can see me. That is the only qualification, to see me by just drinking milk. Then Chaitanya Mahaprabhu said, what qualification this Gajendra had? What qualification this Hanuman had? Who was a monkey? What qualification this milkmaid, gopis, they were simple milkmaid, दूध वाले थे. उनका क्या qualification था? They attain perfection. They saw Krishna face to face. What qualification they had? Their only qualification was that they were very humble. They were having devotion, and they were humble, and they were like, they were having devotion towards me. That is the only qualification. They attained the perfection. तो कोई भी हो हम लोग, मतलब anybody can attain perfection only if we have that simple heart, accepting gratefully the things. So thank you all very much. Is there any question you can ask?
I went ahead, I think so. So Vijay used to get over by it. Okay. So thank you all very much. So we have learned many lessons. We have completed one shloka today, and next time Narottam Prabhu will be there. He will continue ahead. So thank you all very much for your patience and your time. Hare Krishna. We are stopping. I don't know. You want to eat prasad or you want some kirtan? 5 minutes kirtan. Can give kartal. So we'll do 5 minutes kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Rama Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna
संकीर्तन की की प्रेमानंदे पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनन्तकोटि वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।